భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మరో రాకెట్ ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. LVM3-M3 రాకెట్ ద్వారా ఒకేసారి 36 ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించనుంది. దాన్ని ఇప్పుడు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. 20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of powerhouse searing through the sky. A magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3-M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का. First stage performance normal. Here from the mission control center we can feel the vibrations of the launch. दोनों S-200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर. Generating a peak thrust of 5,952 kilonewtons in vacuum with the S-200 motors thrusting currently. 1 minute. S-200 मोटर जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है. इसका एक मोटर का प्रणोदक करीब 200 टन का होता है. इस दौरान यह कुल 12,000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है और यह करीब 136 सेकंड्स तक चलकर यान से पृथक कर दिया जाएगा. The trajectory during the atmospheric regime is to have least angle of attack with respect to wind so that the launch vehicle structures experience lesser loads. The S-200s are 26 meters long and 3.2 meters in diameter, carrying 202.6 tons of propellant. अब कोर चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. The core L110 and the two S-200 boosters all thrusting currently. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे S-200 का पृथक्करण. 200 stages are separated. जी हाँ, S-200 बूस्टर्स को सेपरेट कर दिया गया है तथा L110 या चरण प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है. On your TV screens, the visuals from the onboard camera showing the separation event of the S-200 boosters. The L110 core stage alone currently thrusting. S-200 बूस्टर्स को जेटिसनिंग मोटर का प्रयोग कर बड़ी सावधानी से यान से अलग कर दिया जाता है. L110 जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है वर्तमान में प्रज्वलित है. Payload fairing separated. Slope guidance initiated. Shar, Bangalore and Trivandrum ground stations are currently tracking and the two major flight events have been completed. The separation of payload fairing and the initiation of closed loop guidance. यान की ऊंचाई 142 किलोमीटर. अब यह वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है. यान पूरी तरह सामान्य निष्पादन करता हुआ अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, यानी सेंसर्स की मदद से वह स्वयं का दिशा निर्धारण कर रहा है. Current altitude 163 kilometers. Plus 4 minutes. The L110 stage is powered by twin Vikas engines. The total burn time is close to 200 seconds.
यान पूर्णतः अपेक्षित पथ को अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Cryo stage is authorized. कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे L110 चरण का प्रज्वलन Just 5 समाप्त हो minutes. जाएगा और तत्पश्चात L110 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। 110 stage thrust cut off and separated. C25 ignition commanded. 25 ignition confirmed. Several pieces of good news for the flight events. L110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle. The C25 cryogenic engine has started its operation. L110 चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अंतिम चरण जो कि C25 क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफलतापूर्वक प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में वह प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जा रहा है। Plus 6 minutes. इसका प्रज्वलन काल करीब 640 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कक्षा की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी और अंतःक्षेपण किया जाएगा। 28.55 tons of propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. तृतीय तथा अंतिम चरण LVM3 का क्रायोजेनिक ईंधन LH2 तथा लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित है। यह चरण बहुत ही जटिल C20 इंजन से बना होता है। इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है। इस चरण का प्रज्वलन L110 चरण के बंद होने के तुरंत बाद किया गया है। यह चरण कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। The advantage of having cryo stage as upper stage is the high specific impulse of the propellant combination. Cryo stage performance normal. Having high specific impulse roughly means a lesser quantity of fuel being able to impart higher delta V or the velocity addition to the ongoing stage. Plus 8 minutes. हर एक चरण के तंत्र विशेषज्ञ पूरी तरह रोमांचित रहते हैं जब उनका तंत्र पूर्ण निष्पादन कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Shah, Trivandrum and Bengaluru ground stations tracking in the meantime. The tracking of the LVM3 OneWeb India 2 mission is carried out through a network of ground stations of ISRO Telemetry, Tracking and Command Network, ISTRAC, along the flight path. The trajectory and separation events are ascertained through the ground stations. For this mission, Sriharikota, Bengaluru, Trivandrum, Antarctica, Savalbird and Lucknow ground stations are participating. Plus 9 minutes. To cater to the visibility between the Trivandrum and Antarctica ground station limits, a shipborne terminal is deployed to importantly view the cryo stage operational regime and the separation of first and Cryo second batch stage of performance satellites. normal. For this particular mission, for about 43 minutes after the injection of the fourth batch of satellites, the rocket goes out of the coverage of ground tracking stations. In the meantime, the data of the inertial navigation system is stored on board, and when the next ground station
cellular blood is starting to acquire the data. The confirmation of separation events and exact time and injection parameters of the separation events are telemetered. वन वेब समूह का यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक समझौते के अंतर्गत यह दूसरा प्रमोशन मिशन है। इस समझौते के तहत 72 उपग्रहों को निम्न भूकक्षा में स्थापित किया जाना है, जिसमें से 36 उपग्रह LVM3-M2 वन वेब इंडिया 1 मिशन के साथ उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं और आज वन वेब इंडिया 2 मिशन में अगले 36 उपग्रहों को प्रमोचित किया जा रहा है। यह वन वेब कंपनी के लिए 18वां प्रमोशन है। इससे पहले कुल 588 उपग्रह अन्य प्रमोशन यान से पहले ही भेजे जा चुके हैं। इस मिशन की सफलता के पश्चात वन वेब कंपनी प्रथम निम्न भूकक्षा वाले उपग्रहों के नक्षत्र का निर्माण पूरा हो जाएगा। LVM3-M3 రాకెట్ ద్వారా ఒకేసారి 36 ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించనుంది ఇస్రో ప్రయోగించింది. ఇవాళ ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఈ ప్రయోగానికి వేదిక అయింది. మరో రికార్డును సృష్టించడానికి సన్నద్ధమైంది ఇస్రో. కమర్షియల్ బాట పట్టిన తర్వాత అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వివిధ దేశాలు, కార్పొరేట్ కంపెనీలకు చెందిన ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి విజయవంతంగా ప్రయోగిస్తోంది. తాజాగా LVM3-M3 రాకెట్ ద్వారా ఒకేసారి 36 ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించడానికి ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయోగించింది. ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించిన కౌంట్ డౌన్ శనివారం ఉదయం నుంచి కొనసాగుతోంది. 8 గంటల నుంచి కొనసాగినటువంటి ఈ కౌంట్ డౌన్ 9 గంటలకు ఎట్టకేలకు ప్రయోగించింది ఇస్రో. The second mission of OneWeb with ISRO in collaboration with New Space India Limited. The previous mission with LVM3-M2 was the 14th mission for one. ఇక బ్రాడ్ బ్యాండ్ సేవలను మరింత మెరుగుపరచడానికి జెన్ 1 కన్సల్టేషన్ నెట్వర్క్ శాటిలైట్స్ ను ప్రయోగించడానికి ఇస్రో సహకారాన్ని తీసుకున్నది వన్ వెబ్ ఇంటర్నెట్. బ్రిటన్ కు చెందిన నెట్వర్క్ యాక్సెస్ అసోసియేట్స్ లిమిటెడ్ గ్రూప్ లో వన్ వెబ్ ఒకటి. మొత్తంగా 72 శాటిలైట్స్ ను లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో ప్రవేశపెట్టడానికి ఇస్రోతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఇది వరకు కూడా ఇదే కంపెనీకి చెందిన శాటిలైట్స్ ను ప్రయోగించింది ఇస్రో. తాజాగా 36 ఉపగ్రహాలను నింగిలోకి ప్రయోగించింది. లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3 ద్వారా ఉపగ్రహాలను కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది ఇస్రో. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం గతంలో రష్యా సహాయాన్ని కోరింది వన్ వెబ్ సంస్థ. రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో అంతరిక్ష కార్యకలాపాలు సోయుజ్ రాకెట్ ప్రయోగాన్ని నిలిపివేసింది. దీంతో ఇస్రో సహకారాన్ని తీసుకుంటోంది. గ్లోబల్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ కవరేజీని మరింత మెరుగుపరచడానికి 588 ఉపగ్రహాల ప్రారంభించాలంటూ వన్ వెబ్ సంస్థ తన భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించుకుంది. ఇక ఉక్రెయిన్తో సుదీర్ఘకాలంగా యుద్ధాన్ని కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో రష్యా తన అంతరిక్ష ప్రయోగాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం వల్ల ఆలస్యమైంది. దీంతో వన్ వెబ్ కంపెనీ ఇస్రోతో పాటు ఎలాన్ మస్క్ కు చెందిన స్పేస్ ఎక్స్ తో కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకుంది. Plus 13 minutes. OneWeb is a global communications network powered from space, enabling connectivity for governments, businesses, and communities. OneWeb Gen 1 satellite constellation comprises of 648 individual satellites which are placed in low Earth orbit. India's Bharti Enterprises serves as a major investor and shareholder in OneWeb. As we told, this is OneWeb's 18th launch, its third this year. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ और यह दर्शाता है कि इसरो किस गुणवत्ता से, किस विश्वसनीयता से यह तंत्र का विकास कर इनका निर्माण किया जाता है और इनका निष्पादन पूरी तरह अपेक्षित। Cryo stage performance normal. तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। For the present mission, the total burn time of C-25 is 632 seconds.
భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మరో రాకెట్ ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. LVM3-M3 రాకెట్ ద్వారా ఒకేసారి 36 ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించింది. ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఈ ప్రయోగానికి వేదిక అయింది. ఇక మరో రికార్డును సృష్టించడానికి సన్నద్ధమైంది ఇస్రో. కమర్షియల్ బాట పట్టిన తర్వాత అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వివిధ దేశాలు, కార్పొరేట్ కంపెనీలకు చెందిన ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. Cryogenic upper stage currently thrusting. ఇక తాజాగా LVM3-M3 రాకెట్ ద్వారా ఒకేసారి 36 ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించడానికి ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది. ఈ మేరకు అంతరిక్షంలోకి పంపించింది ఇస్రో. सामान्य निष्पादन करता हुआ आगे बढ़ रहा है. यह इंजन इतना जटिल है और भारत इसमें पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है. अभी पुष्टि हुई. C-25 इंजन को शट ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है. The C-25 stage thrust has been cut off, and now we are awaiting the correct injection parameters for the separation of the first and second batch of satellites. 16 minutes. प्रथम चरण के 4 उपग्रहों की कक्षीय स्थितियां कुछ इस प्रकार होंगी. इसकी ऊंचाई 455.5 किलोमीटर के करीब और सापेक्ष गति 7.63 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी. Today's launch will bring the total number of satellites in the constellation to 618. A major milestone will be achieved with the number of satellites now in orbit, enabling the global service. OneWeb will become the first LEO operator to reach this milestone of being ready to roll out its global coverage. वर्तमान में तृतीय चरण इंजेक्शन कंडीशंस आर अचीव्ड. अपनी उचित अभिवृद्धि प्राप्त करता हुआ और कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर रहा है. कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे प्रथम समूह के 4 उपग्रहों का प्रमोचन. Cryo stage orienting itself for the separation event of the first batch of satellites, namely 1K, 3K, 5K and 7K. 30 seconds from then, the second batch of satellites, namely 2A, 4A, 6A and 8A will be separated. Plus 18 minutes. न सिर्फ इसरो के बल्कि OneWeb कंपनी के सभी लोग बड़ी उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनके उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिए जाएंगे. Each satellite weighs 150 kgs and the cumulative payload mass for this mission is 5,805 kgs, including the satellite dispenser. Plus 19 minutes. कक्षीय स्थितियां प्राप्त हो चुके हैं. अब कुछ ही क्षणों में प्रथम 4 उपग्रह 1K, 3K, 5K और 7K का प्रक्षेपण होगा.
1K, 3K, 5K, 7K satellites are separated. और यहाँ हर्ष का पल सबके सामने प्रथम 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। अगले 30 सेकंड में अगले 4 उपग्रह 2A, 4A, 6A और 8 का अंतक्षेपण किया जाएगा। Here the Plus 20 minutes. LVM3-M3 OneWeb India 2 mission has injected its first batch. 2A, 4A, 6A, 8A satellites are separated. Visuals from the onboard camera confirming the separation event of the second batch of satellites 2A, 4A, 6A and 8A. जी हाँ, सफलतापूर्वक द्वितीय समूह के 4 उपग्रहों को अंतक्षेपित कर दिया गया है। 2A, 4A, 6A और 8A। यह सभी के लिए बहुत ही हर्ष का पल। यह मिशन अपनी सफलता की ओर। Current altitude is 457 kilometers. These satellites will eventually be maneuvered into the altitude of about 1200 kilometers. Plus 21 minutes. 12 orbital planes cumulatively contain 588 satellites that are active. Each orbital plane has a separation of 4 kilometers in altitude to avoid collision of satellites. ऑन बोर्ड कैमरा का यह विहंगम दृश्य जिसमें हम देख रहे हैं सैटेलाइट अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। अभी मिशन जारी है। अगले कुछ क्षणों में हम देखेंगे अन्य 4 उपग्रहों का प्रमोशन। इस दौरान तृतीय चरण पुनः कक्षा की स्थितियां प्राप्त करने के लिए उचित अभिवृत्ति प्राप्त करेंगे। अगले समूह के 4 उपग्रहों को प्रमोशन के लिए अब से करीबन 800 सेकंड की देरी लगेगी। The separation events are timed apart as 30 seconds and 800 seconds between alternate batches. The first and second batch of satellites have been separated. Now we are waiting the third batch of satellites, but in the meantime, the cryogenic upper stage will reorient itself and add velocity to get ready for the next separation. The first and second batch of satellites have been injected into 455 and 56 kilometers of altitude with a relative velocity of 7.628 kilometers per second. For the next batch of satellites, the stage will go to an orbit of 469 kilometers altitude, while the relative velocity will be 7.611 kilometers per second. इस मिशन में सभी 36 उपग्रहों को 5 चरणों में उनके उद्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। क्रायो स्टेज के बंद होने के पश्चात प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। इसमें लिक्विड एपोजी मोटर्स की मदद से उचित अभिवृत्ति नियंत्रण किया गया और यान कक्षा प्राप्त करते ही अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह को प्रमोचित किया गया। अभियान द्वितीय चरण की ओर चल पड़ा है। इस कक्षांतरण में
लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की जानी है और सापेक्ष गति 7.6 ఇక ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించిన కౌంట్ డౌన్ శనివారం ఉదయం నుంచి కొనసాగుతోంది. फिर पुनः శనివారం ఉదయం నుంచి కొనసాగిన కౌంట్ డౌన్ 24 గంటల 30 నిమిషాల వరకు కొనసాగింది. అనంతరం ఈ రాకెట్ను ప్రయోగించారు ఇస్రో. అంతకుముందు 3 దశల రాకెట్ను అనుసంధానం చేశారు. దానిని ప్రయోగ వేదికపై అమర్చి అన్ని రకాల పరీక్షలు నిర్వహించి లాంచ్ ఆథరైజేషన్ బోర్డు వారికి అప్పగించారు ఇస్రో అధికారులు. ఇక బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలను మరింత మెరుగుపరచడానికి జెన్ 1 కన్సల్టేషన్ నెట్వర్క్ శాటిలైట్స్ ను ప్రయోగించడానికి ఇస్రో సహకారాన్ని తీసుకుంది వన్ వెబ్ ఇంటర్నెట్. బ్రిటన్ కు చెందిన నెట్వర్క్ యాక్సెస్ అసోసియేట్స్ లిమిటెడ్ గ్రూప్ లో వన్ వెబ్ ఒకటి. మొత్తంగా 72 శాటిలైట్స్ ను లో ఎర్త్ లో ఆర్బిట్స్ లో ప్రవేశపెట్టడానికి ఇస్రోతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఇదివరకు కూడా ఇదే కంపెనీకి చెందిన శాటిలైట్స్ ను ప్రయోగించింది ఇస్రో. తాజాగా 36 ఉపగ్రహాలను నింగిలోకి ప్రయోగించింది. లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3 ద్వారా ఉపగ్రహాలను కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది ఇస్రో. ఇక ఈ ప్రాజెక్టు కోసం గతంలో రష్యా సహాయాన్ని కోరింది వన్ వెబ్ సంస్థ. రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అంతరిక్ష కార్యకలాపాలు సోయూజ్ రాకెట్ ప్రయోగాన్ని నిలిపివేసింది. దీంతో ఇస్రో సహకారాన్ని తీసుకుంటోంది. గ్లోబల్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ కవరేజీని మరింత మెరుగుపరచడానికి 588 ఉపగ్రహాల ప్రారంభించాలంటూ వన్ వెబ్ సంస్థ తన భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించుకుంది. ఉక్రెయిన్తో సుదీర్ఘకాలంగా యుద్ధం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో రష్యా తన అంతరిక్ష ప్రయోగాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం వల్ల ఆలస్యమైంది. దీంతో వన్ వెబ్ కంపెనీ ఇస్రోతో పాటు ఎలాన్ మస్క్ కు చెందిన స్పేస్ ఎక్స్ తో కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకుంది. We are 26.5 minutes away from past the launch time. The total mission duration of LVM3-M3 OneWeb India 2 mission is 75 minutes. तृतीय चरण अपनी अगली कक्षा के लिए अग्रसर है, जो कि 469.8 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.611 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति होगी। वर्तमान में यान की ऊंचाई 465 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.61 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Speaking about the OneWeb satellites, the payload of the satellite is a bent pipe system operating in Ku and Ka band. The forward link receives Ka band signals from the gateway via the satellite Ka antenna. The return link receives Ku band signals from the user terminals via the satellite Ku antenna. The next batch of satellites to be separated are 1A, 3A, 5A and 7A. Thereafter, the fourth batch, namely 2B, 4B, 6B and 8B will be separated. यान पूर्व निर्धारित तरीके से प्रदर्शन करता हुआ अपने मिशन को पूरा करने की ओर अग्रसर है। अब तक हम LVM3 की 5 सफल प्रमोशन देख चुके हैं। वर्तमान में यह LVM3 का 6वां प्रमोशन है। ज्ञात हो कि LVM3M1 मिशन के साथ हमने प्रसिद्ध चंद्रयान 2 मिशन का प्रमोशन इसी यान से किया था। फिर LVM3M2 में हमने देखा कि OneWeb के प्रथम 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोशित किया गया था और वर्तमान में M3 जो कि अगले 36 उपग्रहों को उनकी निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करने के लिए अग्रसर है। LVM3 इसरो का सबसे भारी और सबसे उन्नत प्रमोशन यान है।
जिसने अपनी विश्वसनीयता और दृढ़ता सिद्ध की है और आगे भी कर रहे हैं। इस वर्ष का यह द्वितीय मिशन है इसरो के लिए। इससे पहले SSLV D2 EOS 7 का सफल मिशन हमने 10 फरवरी 2023 को देखा था। We are 30 minutes past the launch time and currently the Antarctica ground station is tracking. And cryo stage is reorienting itself for the third batch of separation event. A few seconds later, after confirming the next two batch of satellite separation, the rocket goes out of the visibility range of the ground stations. And after a gap of 43 minutes, the data will be acquired by the Savilbirds ground station. चूंकि यह मिशन पूर्ण दक्षिणी मिशन है, इसमें शार स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस, इसके अलावा बेंगलोर, त्रिवेंद्रम और ख़ास तौर पर तैनात किए शिपबोर्न ट्रैकिंग, अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन, स्वालबर्ड स्थित तथा लखनऊ स्थित भू स्टेशन हमें इस यान की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान में अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन हमें यान के आंकड़े प्रदान कर रहा है। "20 satellites of this mission will be separated in the non-visibility region, whose confirmation will be available much later." अभियान उचित अभिवृत्ति प्राप्त करता हुआ अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर रहा है। OneWeb के प्रथम पीढ़ी के उपग्रह नक्षत्र 150 केजी वाले उपग्रह के समूह हैं। अब तक 588 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। इस प्रमोशन के पश्चात यह संख्या 618 पहुंच जाएगी। इन सभी उपग्रहों को 12 समतल प्लेन्स में बांटा गया है और यह 1200 किलोमीटर की ऊंचाई से सेवाएं प्रदान करेंगे। हर एक प्लेन में आपस में 4 किलोमीटर की दूरी बनाई गई है ताकि इससे टकराव की संभावना खत्म की जा सके। तृतीय और अंतिम चरण यान का उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर चुका है। कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में अगले समूह के 4 उपग्रह 1A, 3A, 5A तथा 7A का अंतक्षेपण उनकी निर्दिष्ट कक्षा में किया जाएगा। 1A, 3A, 5A, 7A satellites are separated. And we have the confirmation of the separation of satellites 1A, 3A, 5A and 7A. This completes the third batch of separation. जी हाँ, तृतीय समूह के उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। अगले कुछ सेकंड्स में अगले 4 उपग्रह 2B, 4B, 6B तथा 8B 6B, 8B satellites are separated. Now we have the confirmation of the fourth batch of satellites. This is Range Operation Director. 16 satellites are separated till now. Mission is continuing. Remaining 20 satellites will separate as per timeline in the non-visibility period. These 20 satellite separation will be confirmed after Svalbard telemetry station acquisition. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. All stations involved in operation shall continue in positions
Others shall reassemble at 10:10 hours IST. Over to Mission Director. सोलह उपग्रह प्रमोचित किए जा चुके हैं, अभी भी मिशन जारी है। अगले 20 उपग्रह प्रमोचित किए जाने हैं। कुछ समय पर इसकी पुष्टि की जाएगी। So far, 16 satellites have been injected into the orbit, 20 more to go. Now let's join for the address by Secretary TOS Chairman ISRO, Sri S. Somnath.